And may we always remember that it's our people that give our partnership strength. From all the backgrounds and beliefs, they inspire us, challenge us, tell us the truth, and push us forward. They're the reason our democracies endure, evolve, reflect, and renew generation after generation. और हम हमेशा याद रखें, ये हमारे लोग हैं जो हमारी साझेदारी को ताकत देते हैं। सभी पृष्ठभूमि और मान्यताओं से वे हमें प्रेरित करते हैं, हमें चुनौती देते हैं, हमें सच बताते हैं और हमें आगे की ओर बढ़ाते हैं। और ये कारण है हमारे लोकतंत्र में कि वो दृढ़ता दिखाते हैं और विकसित होते हैं और वो प्रतिबिंबित करते हैं, नवीनीकृत करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। I've seen in my visit to India, and I see it in the diaspora here in America, in the arts, education, in the media, law, medicine, and science, and businesses of every size, in spelling bee champions, even in cricket clubs across the country, including back in my home state of Delaware, and a record number of Indian Americans in Congress who are here tonight: Rio, Ami, Raja, Sherry, Pamela, and, well, I won't go on. Okay, मैंने इसे भारत की अपनी यात्राओं में देखा है और मैं इसे यहाँ अमेरिका में प्रवासी भारतीयों में भी देखता हूँ। मैंने ये देखा है कला में, शिक्षा में, मीडिया में, कानून, चिकित्सा और विज्ञान, हर आकार के व्यवसाय में, स्पेलिंग बी चैंपियनशिप में और यहाँ तक कि देश भर के क्रिकेट क्लबों में भी, जिसमें मेरे गृह राज्य डेलावेयर भी शामिल हैं, और कांग्रेस में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय अमेरिकियों में जो आज रात यहाँ उपस्थित हैं: रो, अमी, राजा, श्री, प्रमिला। I have a great working relationship with all of you. In fact, after her critical leadership in one of the legislative victories, I called Congresswoman Jayapal's mother in India to thank her and wishing her happy Diwali. It was an incredible moment. I think she wondered who in God's name is calling me. आप सभी के साथ मेरे बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं। वास्तव में उनके महत्वपूर्ण नेतृत्व के बाद हमारी विधायी जीत में से एक पर मैंने भारत में कांग्रेस सदस्य जयपाल की मां को फोन किया और उन्हें धन्यवाद देने के लिए। उन्हें लगा कि पता नहीं कौन फोन कर रहा है, और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। ये एक अविश्वसनीय क्षण था। As I said this morning, we see the pride of the community in our incredible Vice President. Thank you, Kamala. Thank you, thank you, thank you. Mr. Prime Minister, I got to get that translated. जैसे कि मैंने आज सुबह कहा था, हम अपने अविश्वसनीय उपराष्ट्रपति में हम अपने समुदाय के गौरव को देखते हैं। धन्यवाद कमला जी, धन्यवाद। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast, but I don't know if we have any glasses. Please join me in a toast. Here it comes. The good news for both of us, neither of us drink. That is what? Ginger ale, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें हमारे एक एम्ब्रोस थे जो उन्होंने कहा था कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बाएं हाथ से अपना ग्लास उठाएं, और मुझे लगा था हमारे पास पहले कोई ग्लास नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जिंजर एल है। Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद।
आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं और मेरे साथ टोस्ट में शामिल हों, हमारी साझेदारी के लिए, हमारे लोगों के लिए और आगे आने वाली सब संभावनाओं के लिए। दो अच्छे दोस्त, दो महान राष्ट्र और दो महान शक्तियां। चीयर्स। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, good evening. First of all, I thank President Biden for this wonderful dinner today. My special thanks to Dr. Jill Biden for her personal efforts and attention in making my visit a success. I would also like to express my gratitude to her for the magnificent organization of today's event. कल शाम आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जेस्चर के लिए, आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। Yesterday evening, you opened the doors of your house to me. I am deeply grateful to you for this special gesture, for your friendship and warm hospitality. मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ही लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। Mr. President, this evening is made special by the presence of the people of our two countries. Bringing the values of democracy and diversity to life, they are our most precious assets. आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड के समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे, आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल। You've gathered a group of exceptionally talented and remarkable people tonight. I must commend you for that. All these people symbolize so much about the India-US relations, our energy, our dynamism, and our potential. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है।
भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। Indian Americans have come a long way in the US. They are proud of India's values, democratic traditions, and culture, and have always found a respectful place in America's melting pot. Indian Americans have played a significant role in further strengthening the inclusive society and economy of the US. हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। Be it hospitals or hotels, universities or research labs, gas stations or logistics, management or IT, they are making their mark everywhere. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं। And now some of them are even in the White House. जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच अब अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। Amidst the love for baseball, cricket is also getting popular in the US. The American team is trying its best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success. मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। Mr. President, for over 5 decades, through all the sweeping changes in the world, you've worked hard in the service of your nation and the entire humanity. You've turned every adversity into strength, loss into resolve, challenge into a mission. लगभग 1 दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे, तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। I first met you nearly a decade ago when you were the Vice President, and I see the same commitment and intensity even today in you. आप बोलने में सॉफ्ट है, पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। You are soft-spoken, but when it comes to action, you are very strong. और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। And I know that as an educationist, Dr. Jill Biden has made a tremendous contribution in this journey.
फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति बाइडेन और मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की। शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया। Friends, President Biden and I had some very wide-ranging and deep conversations today. I think our teams got tired of taking notes, and yet it felt like we were running out of time. मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। I don't want to speak too much about India-US relations because I know this is my 5th speech for the day, or maybe it's the 6th. As you can see, I really have lost count. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था, और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। Mr. President, in 2014, when you had hosted a banquet for me, at that time I was observing a 9-day religious fast. And I remember you were asking me again and again what I could eat during my fast. But it was not possible for me to eat anything. And you were quite concerned about it. Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर है, और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है। लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। I know everyone is eager to have dinner. Looking at today's special menu, I know the effort made by Dr. Biden in very delicately curating today's menu. But there is one more thing left to do. Please join me in raising a toast. A toast to our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden. A toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. Enjoy your meal. स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये संयुक्त संबोधन रहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ स्टेट डिनर में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ रिश्ते को और आगे ले जाना है। पीएम के साथ शानदार समय बिताया है। भारत अमेरिका के बीच संबंधों का ये नया दौर शुरू हो चुका है और दोनों देशों के लोग साझेदारी को नई ताकत देते हैं। उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, मित्रता का जिक्र किया, रिश्तों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान न सिर्फ कला के बारे में बात की, बल्कि उन्होंने इस दौरान डिनर की भी बात की। उन्होंने कई बातों का जिक्र इस दौरान किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 400 लोग वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखे गए स्टेट डिनर में राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और भारत से भी कई लोग वहां पर पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अरिंदम बागची वहां पर हैं, आनंद महिंद्रा, डॉक्टर दीपक मित्तल, सत्या नडेला, अनु नडेला, इंदिरा नूई, राज नूई,
समेत कई भारतीय वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले भी स्टेट डिनर के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उस वक्त भी हमने देखा किस तरह से जोरदार स्वागत उनका किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जब स्टेट डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधित किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टेट डिनर के इस वक्त यहाँ पर कई मेहमान मौजूद हैं। अमेरिकन और इंडियंस यहाँ पर मौजूद हैं। बिजनेस पर्सन से लेकर कई आर्टिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्हें खास तौर पर निमंत्रण दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से स्वागत किया गया जब जो बाइडेन ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से और मजबूत स्थिति में हैं। तब तक इस डिनर में कई लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलन भी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं और कई बिजनेसमैन यहां पर मौजूद हैं। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी भी पहुंची हुई हैं। और ये 5 बड़ी बातें आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन की बताते हैं। उन्होंने कहा लोकतंत्र हमारे डीएनए में है और साथ ही उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी भी बताया है। उन्होंने कहा भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। साथ ही कहा कि हम लोकतंत्र को जीते हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र का भी जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि संविधान के आधार पर ये सरकार चलती है। उन्होंने न सिर्फ भारत के लोकतंत्र को सराहा बल्कि अमेरिका के लोकतंत्र का भी उन्होंने जिक्र किया। और यहाँ पर रुक रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर दिया। इस आयोजन में उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी, अमेरिका के विदेश मंत्री समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। स्टेट डिनर के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह कहा कि इस यात्रा में डॉक्टर जिल बाइडेन का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया। साथ ही पीएम ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रिश्तों का ये नया दौर है। भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अमेरिका में क्रिकेट भी खासा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। Mr. Prime Minister and 2 great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है। एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को
रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। Good evening, everyone. 20 years ago, as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, I made clear that the United States and India grew to be the closest friends and partners in the world would be a safer place. I believe that even more today now that I'm president. Mr. Prime Minister, Jill and I have had a wonderful time with you today during your truly productive visit. And tonight, it's a fitting way to celebrate the great bonds of friendship between India and the United States that will long endure. In the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. Because it's only when every person can grasp their fullest potential that we as nations can achieve our highest purpose. चलिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के इतिहास से जुड़ी दिलचस्प जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल 19वीं शताब्दी में स्टेट डिनर मंत्रियों और कांग्रेस के सदस्यों को ही दिए जाते थे। बाद में विदेशी मेहमानों को स्टेट डिनर देने का सिलसिला शुरू हुआ। विदेशी मेहमानों को स्टेट डिनर पिछले करीब 150 साल से दिया जा रहा है और 1874 में पहली बार हवाई के राजा को स्टेट डिनर दिया गया। फर्स्ट लेडी और उनके कर्मचारी ही इस डिनर का पूरा इंतजाम करते हैं। तो इसमें गेस्ट लिस्ट से लेकर मेन्यू तक बैठने का इंतजाम और मनोरंजन का खासा ध्यान रखा जाता है। स्टेट डिनर में मरीन ब्रांड का परफॉर्मेंस भी होता है। 1801 से ही ये परंपरा चलती आ रही है। स्टेट डिनर से पहले अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम के संबोधन के दौरान 15 बार अमेरिकी कांग्रेस के सांसद खड़े हुए और 79 बार उन्होंने तालियां बजाई। बड़ी संख्या में अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया और कई सांसदों ने पीएम के साथ सेल्फी ली। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन हमने सुना। अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें अगर आपको बताया, उन्होंने आतंकवाद पर निशाना साधा। कहा आतंकवाद और कट्टरता सबसे बड़ा खतरा है, इससे निपटने में कोई अगर मगर ना हो। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। कहा आतंकवाद निर्यात करने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि संघर्ष के काले बादल वहां पर घिरे हैं। साथ ही यूक्रेन जंग के बारे में बताया कि यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये बातचीत और कूटनीति का जमाना है। अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। उन्होंने कहा अंतरिक्ष से लेकर समुद्र में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वॉशिंगटन से महा सिद्दीकी जुड़ चुकी हैं, सीनियर एडिटर हैं हमारी। महा, हमने देखा कि किस तरह से एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि बेहद लाइट माहौल स्टेट डिनर के संबोधन में हमने देखा। जी हाँ, और स्टेट डिनर में हमने देखा कि जो मित्रता की वो सुबह से बात कर रहे थे वो काफ़ी साफ तौर पर यहाँ झलक के आई, क्योंकि सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरह से उनके लिए ये स्टेट विजिट रखी है
जो रिसेप्शन हुआ है, जिस तरह से वार्मथ से वो और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उनसे मुलाकात करते हैं, और जिस तरह जिल बाइडेन ने पूरा मेन्यू ओवरसी किया है आज के स्टेट डिनर में, सारा वेजिटेरियन खाना रखा गया है, शाकाहारी खाना रखा गया है, उस सब को देखते हुए उन्होंने कहा कि और एक उन्होंने पुराना उदाहरण भी दिया। उन्होंने बोला कि जब वो काफ़ी साल पहले आए थे और उस वक्त नवरात्रि चल रही थी और उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तब भी जो बाइडेन काफ़ी चिंतित थे कि और बार बार आके पूछ रहे थे उनसे कि आप क्या कुछ खाएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो खा सकते हैं। तो उन्होंने उससे एक उदाहरण लेते हुए बोला कि वो हरदम से ही ऐसे थे और इसी तरह अभी भी हैं कि बहुत वार्मथ से मिलते हैं और अपनी मित्रता दूसरे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। तो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में स्टेट डिनर हुआ, और स्टेट डिनर्स अक्सर ऐसे ही होते हैं क्योंकि जिसको भी कोई भी देश स्टेट डिनर के लिए बुलाता है तो उसको वो एक ऑनर दे रहा होता है, वो उनका स्पेशल गेस्ट होता है। तो कैमराडरी और फ्रेंडशिप और मित्रता दर्शाई जाती है, बोली जाती है शब्दों में भी, क्योंकि ये सब डिप्लोमेसी का पार्ट है एक तरह से। बिल्कुल महा, और कई अमेरिकी और कई भारतीय भी वहाँ पर खास मेहमान पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कितनी देर तक ये कार्यक्रम अभी चलने वाला होगा? जी, इसका जो वक्त हमें बताया गया था स्लॉटेड ये था 4.5 घंटे के लिए, लेकिन हमें ये भी बताया गया था कि 4.5 घंटे से लंबा भी अक्सर स्टेट डिनर चलता है। जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इससे पहले आए थे, जिनको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिनर दिया था, वो स्टेट डिनर लगभग 6.5 से 7 घंटे चला था। शाम के 6:30 बजे शुरू हुआ था और सुबह के 1 बजे जाके ख़त्म हुआ था, जिसमें उन्होंने अमेरिकन पाई गाना भी गाया था और उसकी क्लिप्स वायरल हो गई थी। तो डिनर काफ़ी लंबा चलता है क्योंकि जो जितने भी गेस्ट आते हैं, पहले वो प्रधानमंत्री या जो भी जिसको भी गेस्ट होता है, इस केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे लोग उनसे मुलाकात करवाई जाती है। एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि व्हाइट हाउस के प्रेमिसेस के अंदर होता है। उसके बाद जो आपने चित्र देखे थे कि जहां टोस्ट रेज किया गया और सब सेटल डाउन हुए मेज़ और कुर्सियों पर, वो एक जो व्हाइट हाउस में लॉन है उसमें टेंट के अंडर ये डिनर हुआ, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर कोई इतना बड़ा कमरा है नहीं जहाँ पे इतने लोग अकोमोडेट हो जाएं। तो हरदम जो स्टेट डिनर होता है वो इसी तरह बाहर लॉन्स में किया जाता है, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। तो डिनर लंबा खिंच सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब थोड़ी देर में हालांकि ख़त्म हो जाना चाहिए ये डिनर, लेकिन डिनर की कोई भी जैसे आप कहिए वक्त निर्धारित नहीं है। अगर बातचीत चलती रही और चिट चैटिंग चलती रही, डिनर आगे भी बढ़ सकता है, लंबा भी हो सकता है। ये हमें पहले ही बता दिया गया था। जी बिल्कुल। और पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर जिक्र किया है। पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है और चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर काले बादल घिर गए हैं, उस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस में उनका एड्रेस था, जॉइंट मीटिंग ऑफ यूएस कांग्रेस को, उसमें उन्होंने जो टेररिज्म की बात की, आतंकवाद की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, वो क्लियरली भारत के एंगल से देखें तो वो पाकिस्तान की तरफ ही लगता है कि एक तरह से उनको एड्रेस करा गया है। और क्योंकि जब हमने ब्रीफिंग में देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि दोनों तरफ ये अग्री करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अरेस्ट करना चाहिए। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेसिफिकली जब भी मेंशन होता है तो उसका रेफरेंस डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ होता है और जो आतंकवाद वहाँ से भारत की ओर आता है। तो ये थी पाकिस्तान और आतंकवाद की बात। दूसरी तरफ चीन का, जी हाँ, बिना नाम लिए जब भी इंडो पैसिफिक की बात होती है और उसमें ऐसी बात होती है कि कोई एक ऐसी कंट्री है जो कोअर्जन और अग्रेशन का इस्तेमाल कर रही है, तो वो भी उंगली सीधे चीन की तरफ ही होती है। और एक बहुत अहम बात इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी उनके एड्रेस में, वो ये थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंडो पैसिफिक का रेफरेंस दिया तो उन्होंने ये भी बोला
कि ये एक कोर कंसर्न है इंडिया और यूएस के बीच में, और जो रिश्ता नज़दीक आ रहा है जैसे काफ़ी एक्सपर्ट्स कहते हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो दोनों देश नज़दीक आ रहे हैं तो चीन इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है, जो कि इनकी रिलेशनशिप को ड्राइव कर रहा है। हालांकि अगर आप कोई भी अमेरिकन या इंडियन डिप्लोमेट से पूछें तो वो कहते हैं कि रिश्ता जो इंडिया अमेरिका का है वो अपने मेरिट पे स्टैंड करता है। जब मैंने अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेटी से यही सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच अपने इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे रीजंस हैं करीब आने के, कि वो किसी थर्ड कंट्री से नहीं इन्फ्लुएंस या लिंक देखना चाहिए। लेकिन क्लियरली जो इंडो पैसिफिक में थ्रेट है, एक कॉमन थ्रेट है चीन का, भारत और अमेरिका दोनों के लिए, वो एक ड्राइविंग फोर्स है इस रिश्ते के लिए। शुक्रिया आपका महा, इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अभी स्टेट डिनर चल रहा है, कई मेहमान वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया, एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के पहले राजकीय दौरे के। अमेरिका में है प्रधानमंत्री मोदी और खास चर्चा का विषय बना हुआ है उनका ये दौरा। पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की अगर बड़ी बातें आपको बताएं, आतंकवाद और कट्टरता को उन्होंने सबसे बड़ा खतरा और दुश्मन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे निपटने में कोई अगर मगर ना की जाए। पाकिस्तान पर बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा, कहा आतंकवाद निर्यात करने वाली ताकतों पर हमें काबू पाना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के काले बादल घिरे हैं और उन्हें भी हमें देखना होगा। साथ ही यूक्रेन जंग का जिक्र किया, कहा इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। ये कोई युद्ध का जमाना नहीं है, ये बातचीत और कूटनीति का जमाना है। अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। उन्होंने कहा अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक हमें मिलकर काम करना होगा और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। There have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who
who has made history. I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. We also remember many others who worked for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. Everyone wants to understand India's development, democracy, and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I am happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. Distinguished members, the Vedas are one of the world's oldest scriptures. They are a great treasure of humanity composed thousands of years ago. Back then, women sages composed many verses in these Vedas. And today, in modern India, women are leading us to a better future. India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Nearly 1.5 million
1.5 million elected women leaders at various levels. And that is of local governments. Today, women serve our country in the army, navy, and air force. India also has the highest percentage of women airline pilots in the world. And they have also put us on Mars by leading our Mars mission. We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. The last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. Mr. Speaker, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. The dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. By being mindful in making choices, every individual can make a positive impact. Making sustainability a mass movement, we help the world reach the net zero target faster. Our vision is pro-planet progress. Our vision is pro-planet prosperity. Our vision is pro-planet people. We took banking to the unbanked with the world's largest financial inclusion drive.
Nearly 500 million people benefited. This is close to the population of North America. We have worked on building digital India. Today, there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. This is more than the population of Europe. We protected our people with 2.2 billion doses of made in India COVID vaccines. And that too free cost. If you visit India, you will see everyone is using phones for payments, including street vendors. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India. Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in a revolution of opportunities. Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। I count on your continued support to the India-US partnership. When I was here in 2016, I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Thank you once again, Mr. Speaker, Madam Vice President, and the distinguished members of this honor. God bless America. Jai Hind. Long live India-US friendship. Thank you. पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर दिया। इस आयोजन में उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई।
स्टेट डिनर के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, इस यात्रा में डॉक्टर जिल बाइडेन का बड़ा योगदान रहा, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही पीएम ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका रिश्तों का ये नया दौर है। भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब तमाम मेहमान व्हाइट हाउस पहुंचे स्टेट डिनर के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि अमेरिका में क्रिकेट भी काफी पॉपुलर हो रहा है। उन्हें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड के लिए शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है। एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। आप बोलने में सॉफ्ट है, पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। Good evening, everyone. 20 years ago, as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, I made clear that the United States and India grew to be the closest friends and partners in the world would be a safer place. I believe that even more today, now that I'm president. Mr. Prime Minister, Jill and I have had a wonderful time with you today during your truly productive visit. And tonight, it's a fitting way to celebrate the great bonds of friendship between India and the United States that will long endure. As two great democracies, in the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. Because it's only when every person can grasp their fullest potential that we as nations can achieve our highest purpose. और स्टेट डिनर में हमने देखा कि जो मित्रता की वो सुबह से बात कर रहे थे वो काफ़ी साफ तौर पर यहाँ झलक के आई, क्योंकि सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरह से उनके लिए ये स्टेट विजिट रखी है, जो रिसेप्शन हुआ है, जिस तरह से वार्मथ से वो और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उनसे मुलाकात करते हैं, और जिस तरह जिल बाइडेन ने पूरा मेन्यू ओवरसी किया है आज के स्टेट डिनर में, सारा वेजिटेरियन खाना रखा गया है, शाकाहारी खाना रखा गया है, उस सब को देखते हुए उन्होंने कहा कि और एक उन्होंने पुराना उदाहरण भी दिया। उन्होंने बोला कि जब वो काफ़ी साल पहले आए थे और उस वक्त नवरात्र चल रही थी और उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तब भी जो बाइडेन काफ़ी चिंतित थे कि और बार बार आके पूछ रहे थे उनसे कि आप क्या कुछ खाएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो खा सकते हैं। तो उन्होंने उससे एक उदाहरण लेते हुए बोला कि वो हरदम से ही ऐसे थे और इसी तरह अभी भी हैं कि बहुत वार्मथ से मिलते हैं और अपनी मित्रता दूसरे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। तो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में स्टेट डिनर हुआ
और स्टेट डिनर्स अक्सर ऐसे ही होते हैं क्योंकि जिसको भी कोई भी देश स्टेट डिनर के लिए बुलाता है तो उसको वो एक ऑनर दे रहा होता है, वो उनका स्पेशल गेस्ट होता है। तो कैमराडरी और फ्रेंडशिप और मित्रता दर्शाई जाती है, बोली जाती है शब्दों में भी, क्योंकि ये सब डिप्लोमेसी का पार्ट है एक तरह से। जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इससे पहले आए थे, जिनको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिनर दिया था, वो स्टेट डिनर लगभग 6.5 से 7 घंटे चला था। शाम के 6:30 बजे शुरू हुआ था और सुबह के 1 बजे जाके ख़त्म हुआ था, और जिसमें उन्होंने अमेरिकन पाई गाना भी गाया था और उसकी क्लिप्स वायरल हो गई थी। तो डिनर काफ़ी लंबा चलता है क्योंकि जो जितने भी गेस्ट आते हैं पहले वो प्रधानमंत्री या जो भी जिसको भी गेस्ट होता है, इस केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे लोग उनसे मुलाकात करवाई जाती है। एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि व्हाइट हाउस के प्रेमिसेस के अंदर होता है। उसके बाद जो आपने चित्र देखे थे कि जहां टोस्ट रेज किया गया और सब सेटल डाउन हुए मेज़ और कुर्सियों पर, वो एक जो व्हाइट हाउस में लॉन है उसमें टेंट के अंडर ये डिनर हुआ, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर कोई इतना बड़ा कमरा है नहीं जहाँ पे इतने लोग अकोमोडेट हो जाएं। तो हरदम जो स्टेट डिनर होता है वो इसी तरह बाहर लॉन्स में किया जाता है, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। तो डिनर लंबा खिंच सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब थोड़ी देर में हालांकि ख़त्म हो जाना चाहिए ये डिनर, लेकिन डिनर की कोई भी जैसे आप कहिए वक्त निर्धारित नहीं है। अगर बातचीत चलती रही और चिट चैटिंग चलती रही, डिनर आगे भी बढ़ सकता है, लंबा भी हो सकता है। यह हमें पहले ही बता दिया गया था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सीधा रुक कर रहे हैं वॉशिंगटन का, जहां इस वक्त विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। आइए सुनते हैं। SF and the Ministry of Electronics of India for funding of joint projects and applied areas of research, which would include semiconductors, next generation communication, cyber security, green technologies, intelligent transport system, etc. Technology space then also continues into defense, where one of the landmark announcements done earlier this morning by GE was the signing of an MOU with HAL for production of GE 414 aero engine for the India's light combat aircraft. There was also an announcement on India-US Defense Industrial Cooperation Roadmap, which also has a heavy segment of technology. There are then technology-related announcements in the field of energy. There are good 6-7 of them. So if you put them all together, you will find that very clearly technology, in particular advanced technology, across various domains, whether it is the defense domain, whether it is in the area of space or other domains, it has been one of the most important outcomes, substantive outcomes from the visit and from the discussions between the leaders. Besides the technology-related segment, another area of important outcome has been people-to-people ties. This finds manifestation in a decision by the US side, and both India and US have agreed that US will start the process to open 2 new consulates in India, one in Ahmedabad, one in Bengaluru. India will open its consulate in Seattle and 2 other places which are to be determined later. Defense has been another important area of significant outcomes during this visit.
One element of it which I've highlighted is the agreement to produce GE 414 engine. The other elements include India's plan to procure MQ-9B Reaper drones from the US. There have also been some decisions and announcements with regard to placement of defense personnel in each other's facilities to better understand different systems and their operations. We have also announced commencement of negotiations with the US Department of Defense for concluding a security of supply arrangement, as also discussions on the reciprocal defense procurement agreement. Energy, as I mentioned earlier on, is another area where we have seen significant and considerable number of outcomes, and these are all available for you to see in the joint statement. Trade has also been another focus area of priority discussions between the two countries, and that also featured in today's discussion. Now, one of the key elements in this has been that out of the 7 WTO disputes between India and the US, there has been a resolution for 6 of the outstanding WTO disputes. There have also been cooperative understandings with regard to upskilling of employees, arrangements between the US Small Business Administration and the Indian Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, announcements of substantial investments by companies like Boeing, 100 million in this case, on infrastructure and programs to train pilots in India, etc. So a fairly important set of announcements. Space, that has been another area which has seen important outcomes being announced today. The one in particular needs mention is the signing by India. Ambassador Sandhu signed it yesterday, is Artemis Accords. India has become signatory to the Artemis Accords, which would essentially open up a new area of partnership between Indian Space Research Organization and NASA and other relevant entities for cooperation in the field of outer space, in particular relating to exploration initiatives on Moon and other outer space objects. The other important segment which I should highlight is India's decision and the US welcome of that decision for us to join the Mineral Security Partnership, which essentially opens up opportunities for India and the US to cooperate in this entire field of critical minerals, which is so important for strategic new industries coming up in the field of electric mobility, energy transition, in particular green transition, etc. So if you were to, if I was to kind of wrap it up in some sense, you will find, expressions of these key elements of day 2 of Prime Minister's visit and also his engagements yesterday, reflected in multiple statements by Prime Minister today, including in particular his congressional address. So Prime Minister spoke of in this visit a new chapter of relations. He spoke of new direction and energy. 3, he emphasized on the strong and futuristic partnership. 4, resilient supply chains was an important aspect which he mentioned in his statements. Mutual trust and shared strategic priorities. Friendship between the two leaders, the Leadership Connect, which has been one of the principal drivers of such a rapid and
large set of achievements that we have managed to register in the relationship. And again, a leadership connect, a friendship, which is not just for the benefit of two of our countries, but is also something which is very, very relevant for the entire humankind and the global peace. The strong strategic partnership, the strong leadership connect. President Biden himself mentioned that both India and US have democracy in their DNA. Is a proof essentially of the power of democracy, of the value-based relationship, but a value-based relationship which also delivers for the respective countries as also for the relationship. And you find expressions of these sentiments in these substantive outcomes which I have listed. So a visit which has been extremely rich on form, but equally, if not more rich on substance. I listed out some of it for you. Discussions, achievements, outcomes, focused not just on the individual items, but also focused on how those outcomes need to be achieved in a value-based framework. Working in this value-based framework on different aspects, the two leaders sketched their vision of the relationship, which, as I said, is pathway for a future cooperation and the convergence of strategic interest. The two also, working in this value system vision, spoke of the need to listen to the voices, other voices which are there in the world for their own benefit. तो यहाँ वॉशिंगटन में विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग चल रही है उसमें जो प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा है उसको बेहद सार्थक बताया और यहाँ कई अहम बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि जी एरोस्पेस और HAL के बीच MOU जो है साइन हुआ है जिसमें कि भारत में फाइटर जेट इंजन बनाएगी अब GE और HAL के साथ समझौते की पुष्टि GE ने की है। आपको बता दें अहमदाबाद और बेंगलुरु में US का कॉन्सुलेट बनेगा, वहीं पर सिएटल में भारत का कॉन्सुलेट बनेगा। इसके अलावा 2 अन्य स्थान और जगह हैं जहां पर भी वो कॉन्सुलेट भारत का बनाया जाएगा जो बाद में डिसाइड किए जाएंगे। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने पर यहाँ पर बातचीत हुई है, सहमति बनी है। स्पेस मिनरल सिक्योरिटी पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है और बताया गया है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो एक नया अध्याय उसकी शुरुआत हो रही है और न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि एक ग्लोबल पीस के लिए भी ये संबंध बेहद अहम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को यहां पर संबोधित कर दिया है। अमेरिकी संसद को ये उनका दूसरी बार दिया गया संबोधन था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता सबसे बड़ा खतरा है, इससे निपटने में कोई अगर मगर ना हो। आतंकवाद निर्यात करने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के काले बादल घिरे हुए हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास हो। ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये बातचीत और कूटनीति का जमाना है। इसके अलावा अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक कारोबार, कृषि, वित्त, कला और AI, स्वास्थ्य सेवा में मिलकर काम कर रहे हैं। आर्थिक विकास, कोविड वैक्सीनेशन और महिला सशक्तिकरण के मामले में भारत की उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री ने गिनाई। Mr. Speaker, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be
no ifs and buts in dealing with it. Everyone wants to understand India's development, democracy and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I am happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। न्यूयॉर्क में सांस्कृतिक कूटनीति से लेकर वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा। सारी न्यूज और विश्लेषण मेरे साथ अमेरिका से सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।